Hello, hi everyone. A very good afternoon to you. This is Neha, your master teacher for economics, and I warmly welcome you all to Vedantu Commerce. कैसे हो आप सब? All good, guys? Yes. Very good. So we are here. हम term 2 का chapter लेकर आए हैं आपके लिए employment, and today is the second lecture of employment chapter, growth and changing structure of employment. Right? Welcome, guys. Hi, Manasvi. Hi, Dolphy. Welcome everyone. So mask up, spread out, get vaccinated. No news as such, yeah, Manasvi. अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है, बाकी आता है तो फिर बताते हैं. ठीक है जी. Hi Priyanka, hello. So economics class 12th. जल्दी से कर दो बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, अटेंडेंस मार्क कर दो जल्दी से अपनी क्लास की. एंड वी आर हियर. आज आपके लिए दो क्लासेस हैं. दिशा मैम इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू एट 7:30. कंट्रोलिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस एज वेल एज प्रोसेस लेके, एंड मैं इम्पोर्टेंस आपको लेकर आई हूँ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का. राइट. एंड फॉर आवर क्लास 11th शीतल मैम इज देयर. एंड बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर सीए, स्कोर 40 आउट ऑफ 40. लॉगरिथम्स आपको पढ़ने मिलेगा आज. राइट. And we have already started with our Telegram group. We have it's active now. So please, आप upcoming notes as well as session updates के लिए you can join the link that is given in the description box below. Fine. यहाँ पर आपको updates आएंगे, quiz questions आएंगे, as well as जिस notes से हम पढ़ा रहे हैं वो उसका PDF भी आएगा. Right? And please guys, जल्दी से weekend mock test mania. Who all appeared for weekend mock test mania? किस किस ने अपियर किया था ये बताओ. डिड यू ऑल अपियर? हाँ जी. तो क्लास 11th में काफी बच्चों ने किया था. वेरी गुड डॉल्फी. जिन्होंने नहीं किया था वो फिर से प्लीज ट्राई एंड अपियर फॉर द एग्जामिनेशन. आज तीन भारद्वाज हैज गॉट क्लास 11th में 20 आउट ऑफ 20 इन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है. Then class 12th में, if we speak about, we have Sanjay K. He's got 28 out of 30 in class 12 CBSE Commerce. Amrita Varshini, she's got 26 out of 30 in class 11 CBSE Commerce. ठीक है जी. तो we have the session links. अभी तक वो links open है. You can still go ahead and give your examination. आपका भी name आ जाएगा. तो try and score better. ठीक है. And even if you have appeared it, you want to reappear, you can take it with a different mail ID also. ठीक है. But before that, watch the sessions. Watch the sessions, अच्छे से रिवाइज करो, और रीटेक करना है तो किसी और दूसरे ईमेल आईडी से you can take up the test. ठीक है जी. चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. देखो जी, इसमें तो एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, इसमें रोजगार दैट इज एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है. नेशनल फूड फॉर वर्क, दिस इज ऑल्सो योर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम.
यहाँ वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास इज व्हाट, आवास इज हाउसिंग, ठीक है, तो इट इज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके गाइस, सो किसने राइट आंसर दिया है? कॉन्ग्रेचुलेशन अरीबा खान, डी इज योर राइट ऑप्शन। बाकी बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई आया? सारे बच्चे इसमें भी कमेंट सेक्शन में बाद में आज भी होमवर्क क्वेश्चन होगा, कमेंट्स में आपको क्या करना है, राइट जवाब देकर लिखना है, ठीक है जी। चलो, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर वी गोइंग टू बी कवरिंग टुडे? कैजुअलाइजेशन भी आज करेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन भी आज करेंगे, ठीक है। आपने किया था? अच्छा, ओहो, वो दिखा नहीं फिर अभी कमेंट्स में है डॉल्फी वो मैसेज, मैं चेक करूंगी, ठीक है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। वो वीडियो पे जाके वापस से देखना, कमेंट्स में आपने डाला था कि आपने चैट में लिखा था, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा जी। Now, if we speak about the period of 1950 to 2010, आपका GDP grew positively, okay, and it was higher than the employment growth rate. However, always क्या होता है, fluctuations होता है हमारे GDP के growth rate में. Sometimes the nation is progressing well, sometimes it is not. So during this period, employment grew at a rate of not more than 2%. Even if your GDP was growing, तभी आपका employment generation was not growing more, right? Now, in 1990s, we found a widening gap between GDP and employment. ऐसे हमने trend lines बनाए, and widening gap मतलब कि this gap बहुत ज़्यादा difference हो गया between GDP as well as employment, right? This means our Indian economy, without generating employment, we were producing more goods and services. GDP was increasing, but on the other hand, we were not generating any employment. Now, this is a very important concept. ये explain करने के लिए आ सकता है 2 marks के लिए. This phenomena is called as what? Jobless growth. मतलब ग्रोथ हो रहा है आपके जीडीपी में, बट स्टिल आपके जो जॉब्स है वो नहीं बढ़ रहे. आइडियल सिनेरियो इज राइज इन जीडीपी should have a rise in your jobs also, employment also. But if this is not there, if your GDP is increasing but jobs are not increasing at this rate or are at a standstill, this is termed as your jobless growth. Okay. See the pattern, just analyze the pattern sector wise. Now what is this? This is a trend in employment pattern, okay, that which sector had how many percentage of people employed. Okay, so we have from 1972, this is the year, from 1972-73, then we have every 10 years 83 भी है, 93 भी है, then 99-2000 and then 2011-12 का data है. Now employment generation, can you see? Primary sector पहले 75% approximately was generating employment. Now it's reduced to 48.9. But can you see it is still the highest? Yes, it's still the highest. Secondary sector, that is the manufacturing sector, जो हमारे पास बहुत कम था. Only 10.9% people were employed here. Now, we can see that around 24.3% it is there. सबसे ज्यादा ग्रो क्या किया है? सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है आपके सर्विसेज में. पहले वी वर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर. नाउ वी हैव अ कंपेरेबल percentage here. Okay, so it's a decent number.
अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा कम आना चाहिए, ग्रोथ शुड बी देयर इन योर सेकेंडरी एज वेल एज service sector. We are progressing towards that, right? Now, if we speak about self-employed, regular salaried as well as casual, this is the trend. Regular salaried is just 18%, right? Casual workforce, 30%. And self-employed, they are not dependent on anyone for the salaries, 52%, right? This is the trend pattern. Now, what do we mean by casualization of workforce? Casualization मतलब इट्स नॉट लाइक बीइंग कैजुअल. आप बोलते हैं ना ऐसे जनरल लैंग्वेज में कि कैजुअल हो गया, वर्क में कैजुअल हो गया, नहीं, वो मतलब नहीं है. इसका मतलब है कि दे आर मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. वी हैड कैटेगरीज हियर. Just a moment, let me just clear off the ink. Okay, now we can see the category here: self-employed, we can see regular salaried employed, and here is the casual wage laborer. ठीक है, कैजुअल वेज अर्नर भी बोल सकते हो आप, राइट? लेबरर्स डजंट मीन कि आप लेबर ही इमेजिन करेंगे दैट इज डूइंग फिजिकल एक्टिविटी. कैजुअल वर्कफोर्स इज एनीवन हु इज नॉट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, हु इज नॉट अ रेगुलर, उसको रेगुलर सैलरी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ जॉब पे चल जाता है जो, that is termed as casual wage laborers. Fine. Now, casualization of workforce is a term that we use if the self-employed is closing up the business, खुद का business बंद कर रहे हैं, and your regular salaried employees are also quitting jobs. Both of them are trying and opting for your casual wages. मतलब जहां पे काम करना है तो कर लिया, नहीं करना है नहीं किया वाला काम, ठीक है. This is casualization of workforce. Yeah. Let's read. So the process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work is termed as your casualization of workforce, and this is an important topic. Are we getting this, guys? Are we getting it? ये समझ में आया इतना casualization? Any problem till here? Let me know. Are we good? Yep. Okay. Good enough. Now, let's analyze something. Economists say that if casualization increases, more people are quitting up their job. Salary, मतलब government job नहीं चाहिए, regular salary नहीं चाहिए. If they are just quitting their jobs, if casualization increases, the earning of the people, if casualization increases the earning of people, such phenomena should be welcomed. Okay, so what are economists saying? Economists are saying that okay, fine, अगर आप job quit कर रहे हो, it's okay. Regular job quit कर रहे हो, it's okay. If you're closing up your business, it's okay, as long as it is increasing your salary, it is increasing your wages, it is increasing your earning. Such phenomena should be welcomed. So there is no harm here. Okay. So suppose a marginal farmer becomes a full-time agricultural laborer. Do you think he will be happy even if he earns more in his daily wage work? Or will a permanent and regular work of a pharmaceutical industry be happy if he becomes a daily wage laborer, even if her or her earnings increase? आपको क्या लगता है? What is your take on it? This is a question for you. Yes or no?
So for such debates and discussions, guys, हमारे पास वेदांतु के courses and बाकी crash courses भी launch हो गए हैं, right? We are starting off with new batches also. We've already started with one batch. For class 12 crash course, what are you going to get? Before your examination, 60 plus hours of live and interactive classes. आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे. दोज मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज बिफोर एग्जामिनेशन आपका कोई एग्जामिनेशन लेकर आपको बताएगा बेटा ये मिस्टेक्स है. यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम वेल इन द एग्जामिनेशन. सेम पैटर्न पे हम बनाएंगे मॉक टेस्ट. एज यू वेरी वेल नो कि ज्यादा अवेलेबल है नहीं, फर्स्ट टाइम ही पैटर्न है, तो व्हाई नॉट. एक्सपर्ट्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स चेक करके दे रहे हैं. दिस कैन बी टेकन, right? Classes will be taught live and recordings will be available. You can ask unlimited doubts inside the class and Vedantu के ऐप पे भी. And dedicated classes होंगी आपके subjective approach को ध्यान में रखकर. That is your term 2. We are going to be giving you assignments, handwritten notes for your daily revision also. अभी टाइम बहुत ही कम बचा है, क्रैश कोर्स की ही आपको जरूरत है. And a special discounted price is also there for you. If you apply the coupon code NRPRO, guys, आपका डिस्काउंट हो जाएगा applicable and 5400 rupees में it is going to be available to you. Right, guys? Now, let's start informalization of Indian workforce. Okay? Now, casualization हमने पढ़ लिया कि हम salaried एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर वेज अर्नर नहीं है, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम कैजुअल वेज अर्नर्स बन गए हैं, राइट? व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ योर इंडियन वर्कफोर्स? सो economists have argued over the years and the quality of employment have been deteriorating. ठीक है? Now, even after working for more than 10 to 20 years, some people get maturity benefits, some people get PF and gratuity and pension, and some workers don't get it, right? It happens. It depends on what? It depends on the organization where you are working. Will they be providing you with PF? कोई gratuity है, कोई pension scheme है, या फिर आप बीमार हो गए हैं तो आपके लिए कोई मेडिकल बेनिफिट्स है, राइट? दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर organization. Now, why does a person working in a private sector get lower salary as compared to other person who is doing the same work but in public sector also? This is also a debated thing कि यार हर जगह की सैलरी सेम होनी चाहिए, if it's private also, if it's government also. Now, let's see. We can find that a small section of your Indian workforce, they are getting regular income. अभी हमने देखा कि regular employed, जो salaried employed people हैं, वो कितने थे? 18%. It's a very very small section of the Indian workforce, right? Now, जो regular income वाले लोग हैं, they are governed through what? They are governed through labor laws. Okay, and it is going to protect their rights. लेबर लॉज हमेशा आप लेबरर्स जो रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनके राइट्स पे अच्छा मतलब वर्क करता है, ठीक है? नाउ द सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम्स ट्रेड यूनियन. If you are under labor laws, you can form what? Trade union. You can bargain with the employer if they are not giving you better wages. Other benefits if they are not giving you. ठीक है? Now, these हम जो इन लोगों की बात करते हैं, they are termed as your organized sectors or your formal sectors. जो लेबर लॉस के अंडर आ जाते हैं उनको हम क्या बुलाएंगे? ऑर्गेनाइज्ड या फिर फॉर्मल सेक्टर्स. एंड अदर्स जो जिनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर वर्क करने वाले लोगों को हम क्या बुलाएंगे? विच सेक्टर्स डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इनफॉर्मल सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट? Let's see about the formal organized sector. क्या होता है?
So all the public establishment are formal and organized sector, all. And all those private sectors जिसने एम्प्लॉय किया हुआ है 10 वर्कर्स से ज्यादा, 10 और 10 प्लस, ठीक है। हायर्ड वर्कर्स जो हैं वो है 10 और मोर, दीज एस्टैब्लिशमेंट विल बी कमिंग अंडर योर फॉर्मल सेक्टर। दे विल बी फोर्स्ड कि वो लेबर लॉस को एनफोर्स करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, सो दैट दे टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। All those people who are working for them are taken care of. Such sectors are your formal as well as organized sectors. Informal, suppose a carpenter is there, a mechanic is there, or anyone selling, a street vendor is there, हाँ, हम उसे क्या बुलाएंगे? या फिर agricultural laborers are there. They can be said कि they do not have any hired workers or they are self-employed people. So informal sector में कौन कौन आएगा? Informal sectors में all those people who are like who have not been hired, या फिर any organization which is not a organized sector, means that organization is having less than 10 people hired in the organization, वो सारे informal या फिर unorganized sector हो जाने वाले. It includes all non-farm casual work laborers, ठीक है. Then we have what? Your farmers, your agricultural laborers, small enterprises. And small enterprises है तो people working in those enterprises also less than 10. लेस देन 10 है अगर, तो वो सारे के सारे इनफॉर्मल में आ जाएंगे, मतलब कि उनको लेबर लॉज नहीं फॉलो करना पड़ेगा. गॉट इट? दिस इज द डिवाइडिंग क्राइटेरिया. ओके, चलो आप मुझे बताएंगे दैट विच ऑफ दीज आर योर इनफॉर्मल सेक्टर्स. फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल सेक्टर. कैन यू हेल्प मी? एंड ऑल दोज पीपल वॉचिंग प्रीमियर्ड ऑल्सो, तब भी आपने क्या करना पड़ेगा? तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में सारे के सारे आंसर्स मुझे लिख के बताओगे. ये ए है, बी है, सी, डी, ई एंड एफ. ओके, which of these are informal sectors? Come on, I am giving you some time to think. Workers in hotel which have 7 hired workers. Private school teacher in a school which has 25 teachers. A police constable. Nurse in a government hospital. Cycle rickshaw puller. And owner of a textile shop employing 9 workers. All those informal, just write the alphabets. Hi Prem. ठीक है, चलो इनफॉर्मल एक ने बोला, प्रेम ने बोला. नाइन एफ वाला इनफॉर्मल, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है. गवर्नमेंट private but 25 teachers and 7 workers. Informal. Yes, very good. These are your informal sectors, everyone. Right. Chalo, now read this, guys. Informalization in Ahmedabad.
So, what is written here below the picture? It's change in the balance of power in a house. An unemployed mill worker peeling garlic, whereas his wife has a new job of बीड़ी rolling. ठीक है? Okay. चलिए, informalization in Ahmedabad. Let's read. Ahmedabad prosperity with a wealth based on produce of more than 60 textile mills with a labor force of 150,000 workers employed in them. These workers had over the course of the century acquired a certain degree of income security. They had secured jobs with a living wage. They were covered by social security schemes protecting their health and old age. They are a strong trade union, which is not only represented them in disputes, but also run activities for the welfare of workers and their families. In early 1980s, textile mills all over the country began to close down. In some places, such as Mumbai, the mills closed rapidly. In Ahmedabad, the process of closure was long drawn out and spread over a period of 10 years. Over this period, approximately 80,000 permanent workers and 50,000 non-permanent workers lost their job and were driven to informal sector. मतलब फॉर्मल सेक्टर से कहाँ चले गए, इनफॉर्मल सेक्टर में. पहले तो उनके पास जॉब था, सोशल सिक्योरिटी थी, हेल्थ बेनिफिट थे. City experienced an economic recession and public disturbance, especially communal riots. A whole class of workers was thrown back from the middle class into the informal sector, into poverty. There was widespread alcoholism and suicides. Children were withdrawn from the schools and sent to work. Right? So this is a, क्या बोल सकते हैं हम इसको, योर केस स्टडी. इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम हियर गाइस? आपको पूछा जा सकता है दैट विच सेक्टर आर वी डिस्कसिंग अबाउट, और राइट डाउन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. Write some of the, or write two differences between your formal as well as informal sector. Okay, all these can be very well asked. So आपको केस स्टडीज पे भी थोड़ा ध्यान देना है. एंड प्लीज रिमेंबर टर्म 2 में केस स्टडीज में आपको वन लाइन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे. वी कैन सी दैट इन द टर्म 2 वाला जो सैम्पल पेपर्स रिलीज हुआ है सीबीएसई का, उसमें भी केस स्टडीज आता है. बट आफ्टर केस स्टडीज दे हैव गिवन यू प्रॉपर क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिए हुए हैं दैट 2 मार्क्स के लिए ये एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स के लिए ये एक्सप्लेन करो, 1 मार्क के लिए ये एक्सप्लेन करो. सो दे आर गोइंग टू फॉर्म क्वेश्चंस ऑन इनफॉर्मलाइजेशन एंड दिस एम्प्लॉयमेंट चैप्टर. ठीक है, एंड गिव इट टू यू. Right guys, books beta, whatever books you have studied from are the best. Please do not try and change the books right now. Whatever new like जो आपकी सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं, सीबीएसई के रिलीज्ड आंसर्स हैं, उस पैटर्न के आंसर्स हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, दोज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स नो. ठीक है, चूजिंग योर बुक शुड बी डन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द टर्म, नॉट एट एंड ऑफ द सेशन. राइट, यू कैन नॉट चेंज अ बुक. You are just going to waste time. You should be preparing now for answering the questions. कि मुझे ये question आया तो मैं, so try and solve all the past years questions and उनके जो probable answers हैं जो सीबीएसई ने दिए हैं, आपको वही पढ़ना है, वो उसी लैंग्वेज में लिखना है, वही points आपको याद होने चाहिए डॉल्फी. Right? Headings should be memorized now. चलो जी, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हाट? इंडिया की प्रॉब्लम क्या है बेटा? इज इट इनफॉर्मलाइजेशन? इज इट जॉबलेस ग्रोथ? इज इट कैजुअलाइजेशन?
या फिर all of the above? Yes, Dolphy, that's a nice book. You can continue with that. Okay, guys. So third, हम lecture लेने वाले हैं meaning and types of unemployment. Now, in this chapter, this session is very, very important. आपके types, meanings, इसकी पूरी explanation is important. Right, guys? So we are going to continue this on Thursday, 2 p.m. sharp. So stay tuned, everyone. And don't forget, if you want to finish off your course early with us during a crash course, we have already launched a crash course and we are going to be bringing about more batches for you. Okay? So 60 plus hours we are promising you of live interactive classes, tests that are going to help you manage your term 2. न्यू पैटर्न है, नो वन नोज, एंड नया मॉक टेस्ट, हर चीज की सीरीज अवेलेबल हम कराएंगे आपको, राइट? Classes will be taught live and recordings will be made available to you. Unlimited doubt solving is also available on Vedantu's app. Dedicated classes on subjective approach as per CBSE's new pattern. And assignments milenge, handwritten notes milenge for your daily revision also. So many things and at a discounted price of 5,400 only. Let me show you how to go to the link. Here guys, this is the video. नीचे description box में we can see all courses available. Click on the course. Here, class 12th course आ जाएगा, light and classic subscription. Applied the coupon code NRPRO and availed more and more discounts also. Okay, so live interactive online classes, test series and analysis, assignments and notes, doubt solving during class, and on mobile app also. Everything is available to you at 5,400 only if you apply the coupon code NRPRO. So don't forget to subscribe to our channel, everyone, and do like the video if you liked. ठीक है, अगर आपने आज पढ़ा है हमसे, please do like the video. We love the motivation. We have started our Telegram group once again. So for your upcoming notes and session updates, description box में ही Telegram का link है. Go ahead and join that. See you guys in the next class. Tab tak, stay home, stay safe, and stay healthy. Thank you so much for watching, everyone. This is Neha signing off for Vedantu Commerce. Take care and bye bye till then.